Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will again discuss the basics of pharmacokinetics, and our topic is about the mathematical review. And in mathematical review, we will discuss about the types of graph that are used in pharmacokinetics, and we will also discuss the slope of different graphs. What is the meaning of slope? How the slope is calculated? What is basically the slope when it is going down, when the curve is going up, what will be the slope? So its explanation and all these things, they will be discussed in today's lecture. So let's move to the first slide. And we have two types of graph. One is called as the rectilinear graph. This is also called as the rectangular graph. Other name for this is rectangular graph, and it is also known as linear graph. इसको linear graph भी हम कहते हैं. And in case of rectilinear graph, this is a normal graph. It is drawn on Cartesian coordinates, which means that uh, it is plotted on x as well as on the y-axis. In case of graph, the x-axis is having the independent variable, and y-axis it has the dependent variable, such as जिस तरह मैं आपको example दूँ, the time it is a independent variable that will be plotted on the x-axis, and the concentration it changes with time, so that is the dependent variable, and it will be plotted on the x-axis. This is one of the example. In case of linear graph, in case of rectangular graph, in case of rectilinear graph, the distance between the values is equal. Like 5 to 6, the distance between 5 to 6 is the same as that is present between the 4 and 5, and 3 to 4, and 0 to 1, and 1 to 2. So the distance among the values, different values, it is the same. Similarly, on the x-axis, the distance between the values, it is again the same, from 0 to 1, 1 to 2. So it is the same. And if there is a straight line, like in this way, like this way, if there is a straight line, there is a linear relationship between the y-axis y-axis and the x-axis. तो y-axis के ऊपर जो हमारा पैरामीटर होता है, it is basically there is linear relationship between these two parameters. तो depend करता है, if the line is straight, it means there is linear relationship. So taken together, the rectilinear graph, it is plotted on x-axis and y-axis, distance is equal, and if the line is straight, there will be linear relationship, and it is used in pharmacokinetics. It is used. And the next very important type of graph that is used in pharmacokinetics, it is the semilog graph or semi-logarithmic graph. In this case, the one axis, it is the linear, like x-axis is mostly the linear. So that start from the 0 to 1 and 1 to 2. So there is similar distance between the two values, like 3 to 4 it is the same distance between these two values as it is between the 4 to 5. So the distance between the values, it is the same. And on the y-axis, this is the logarithmic, you can say there is logarithmic is increase, and it always start from the 1, and this 1 could be 0.1, 0.001, it could be 1, but at the end there will be, you can say, the 1. So 0.001, 0.00001. So it depends कि आपका data किस तरह का है. That's why we basically choose the y-axis. 1 हम choose करते हैं या 0.1 करते हैं, depend करते हैं हमारा data, it is which type of data. Okay, so convert the exponential curve into the straight line. Basically जब हम इसके ऊपर plot करते हैं, we get the straight line. Sometime it is not available. In case of rectangular graph paper, the straight line, it is not coming, and we plot the data on y-axis, and then we get the straight line. तो ऐसे cases में हमारे पास straight line आती है. तो so by Semilog graph paper, and this Semilog graph paper, it is very helpful when the data spans over large ranges. It means that
अगर हमारा डेटा यानी कि 0.1 से स्टार्ट होकर इन थाउजेंड्स में आता है, सो द बेटर वे इज़ द सेमिलॉग ग्राफ पेपर। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10 and then in the same episode or in the same set that 10 to 100 and from 100 to 1000 in the same set. तो ये इसकी जो increase है, it is you can say that it can accommodate the larger values. So that's why the seminar graph paper, it is mostly used in case of pharmacokinetics. There are different formulae that are basically applied, like the Cp is equal to Cp naught e raised to a raised to power minus kt, that is elimination rate constant, this is the time, and Cp naught is the initial concentration, that is called as the intercept, and Cp is concentration at any time. तो आप उसको calculate कर सकते हैं. This is basically the equation in case of log, natural log. This is a natural log of p, natural log of the intercept and minus kt. So that can be used if you are using the natural log, or in case of common log, then again you have divided it by 2.303. तो यहाँ पे आपने इसको divide करा, and finally you get this kind of equation. So it all depends upon you can say the type of again the data. If the data is first order kinetics, which means that concentration decreases as there is direct relationship between the absorption and the concentration, or there is direct relationship between the elimination and the concentration of drug inside the body. तो हमारे पास जो relationship आता है, it is basically the linear one. So in case of you can say first order kinetics, we mostly apply these kind of graphs. तो हम ज़्यादातर जो graph वगैरह use करते हैं, these are the different graphs that are used. तो ये graph हम mostly use करते हैं. So next is about the slope of the curve, कि जो हमारी slope है, जो हम curve draw करते हैं on the graph, whether it is a rectangular graph or it is the Semilog graph paper. So the slope, what is the slope? The basic definition of slope, this is the change in y divided by the change in x. कि जब आप x को change of y को divide करते हैं x के ऊपर, so that is called as the slope. Or you can, in very simple word, the change in y per unit change in x, that is called as the slope. Now this slope could be positive if the curve is going up. It could be equal to 0 if the slope is going straight horizontally, and if it is going down, the slope is mostly negative, or it is less than 0, so it means it will be negative. So slope could be greater than 0, it could be equal to 0, or it could be less than 0. So that is the possibility. So इसकी जो slope है, that is could be the positive, it could be 0, or it could be negative. तो ज़्यादातर केसेस में यानी कि हमारे पास जो स्लोप होती है, मोस्ट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन, द स्लोप इज गोइंग डाउन एंड इट इज इन माइनस साइन. तो जो हमारी वो है स्लोप है, इट इज इन माइनस साइन. Okay, so basically what we have discussed in our previous lecture is that we have two kind of kinetics. The first one, that is called as zero order kinetics, and another one is called as the first order kinetics. In case of zero order kinetics, the constant amount of drug it is absorbed, or the constant amount of drug it is eliminated, you can say the per time, the specific time, per unit time, to specific amount it is basically the eliminated per time, or per unit time, or per specific time. Now if you plot the data of zero order kinetics, simply the amount or the concentration on the y-axis and the time on the x-axis, you will have the straight line. जब आप इस तरह के रेक्टेंगुलर ग्राफ के ऊपर कंसंट्रेशन को प्लॉट करें, सिंपल कंसंट्रेशन को, विदाउट कन्वर्टिंग इट ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, जो कि हमारा इक्वल डिस्टेंस जहाँ पे होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन. So if you have the straight line, this means the drug is following the zero order kinetics. In case of zero order kinetics, the slope is equal to minus k, that is the zero order elimination rate constant. तो आपकी slope इसकी equal होती है. अगर slope आपकी 10 है, so it means it could be in minus sign or the plus sign. So if you can say the slope is minus
10, then k will be equal to the 10, क्योंकि स्लोप -10 है तो k will be equal to the 10. तो इस तरह आप स्लोप को वो कर सकते हैं, लाइक इन दिस केस द स्लोप इज इट इज डिक्रीजिंग. So basically you can say कि जो intercept है, this is the amount or the concentration of drug at 0 time. In case of intravenous bolus, at 0 time the concentration or the dose it is equal to the amount it is equal to the dose. जब हम intravenous bolus dose देते हैं तो सारी drug IV में चली जाती है और 0 time पे there is maximum amount of drug in the blood that is equal to the dose. So this is basically the formula. और इसकी जो वो है I mean के स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर इसकी जो वो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, हाउ इट इज डिराइव्ड, दैट विल बी कमिंग इन द कमिंग स्लाइड्स. ओके, so this is basically the data that represents के zero time पे concentration was this one, and at 1 hour it was 90, so then 70, followed by next hour it is 60, then next hour it is 50. So in this case the constant amount it is it has been eliminated or it has been decreased. Like in case this is 10, यहाँ पे 10 है, 90 से फिर 10 है, so constant amount you can see कि constant amount it is decreasing. So this kind of kinetics where the constant amount it is decreasing, it is called as zero order kinetics. ये जिस तरह मैंने अभी आपको पहले डिस्क्राइब किया. So in this case, if you apply the equation for zero order kinetics, so the concentration of drug inside the body at any time will be equal to -10x plus the 100 की plus 100 आप उसको करते हैं. 100 is basically the intercept, जो हमारी intercept है उसकी equal है, and the x is equal to the x जो आपका x है, and y is the उसको I mean the time क्या है उस पे, और this is the y की concentration अगर आप find out करना चाहते हैं. So what will be the concentration, what will be the amount at you can say the this x-axis इस टाइम के ऊपर क्या होगी. If it is equal to 0, x is equal to 0 टाइम के ऊपर, तो -10 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा and whole will become equal to 0 and y will be equal to 100. that is the intercept. हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगी. So in this case the slope की जो definition है हमारे पास वो ये है कि y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ये हमारे पास इक्वेशन होती है. So like in this case आप कोई भी डेटा इससे ले सकते हैं कि because everywhere there is 10 degrees, like you take the y2 as 80 and y1 as 90. आप क्योंकि y2 it is less as compared to y1, so 80 minus 90 divided by the time हमारा कितना है कि 2 minus 1, 2 hour है and then 1 hour, so answer is equal to 1. So 80 minus 90 is equal to -10 में हमारा आंसर आता है मिलीग्राम पर आर. अगर ये कंसंट्रेशन होती it would be मिलीग्राम पर ml पर आर हम उसको कहते हैं. So this is the this indicates that the per unit time or per unit hour the amount is decreasing by 10 milligram. So that is the basically the you can say the slope that represents कि decrease हो रहा है, माइनस साइन है. Now k is equal to minus k, तो इसको माइनस के और माइनस से वो हो जाएगा. So k will be equal to मिलीग्राम पर आर. तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है उसका एक यूनिट है, that is मिलीग्राम पर आर in this case. Otherwise अगर कंसंट्रेशन हो it will be equal to मिलीग्राम पर ml per hour, ये इसका यूनिट हो जाता है. So the constant has this kind of unit in case of zero order kinetics. So moving to the next, अगर हम इस प्लॉट को with natural log में कन्वर्ट करते हैं and we plot it on the rectangular graph paper, हमारी कर्व स्ट्रेट नहीं आती. And if the r value, if it is less than if it is you can say the in this case the r value it is less than 0.95. जब 0.95 से अगर r value less हो, so it means there is no very good relationship between x-axis and the y-axis. So usually what we say that there is strong relationship if the r value is equal to r greater than 0.95. तो इसलिए जितनी r value close होती है 1 को, तो इसलिए linear relationship exist करता है. लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो r value जो हमारे 0.9057 आ रही है,
दैट इज लेस देन 0.95। तो ऐसी सिचुएशन में लीनियर रिलेशनशिप इज नॉट गुड। आप इसको देखें, कर्व का रिलेशनशिप गुड नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट द स्लोप when we plot the data of the zero order kinetics and convert that data into natural log. So it is not possible to calculate the you can say the slope. And similarly, in case of zero order kinetics, if you convert the data into common log and you plot the data, you will see कि हमारे पास कर्व फिर भी उस तरह नहीं आती। r is equal to 0.9057 उसकी इक्वल आ जाती है, और फिर अगेन it is less than 0.95। so that's why it cannot be used to calculate the slope। इसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए taken together in case of zero order kinetics, this is the concentration without conversion to natural log or the common log. We can calculate, we can plot it on the x-axis as well as on the y-axis, and from that data we basically can see के हमारे जो रिलेशनशिप है हाउ इट एग्जिस्ट। तो बेसिकली जिस तरह पहली एग्जांपल में मैंने आपको ब्रीफ किया, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एंड यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। एंड स्लोप अगेन इट इज द चेंज इन y with respect to unit change in x। तो जो भी आपका रिजल्ट आता है दैट इज द स्लोप। ओके, so next is the first order kinetics. First order kinetics is different from zero order kinetics, and first order kinetics is followed by most of the drugs। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली उन ड्रग्स के लिए अप्लाई होती है कि लाइक फेनिटाइन हाई डोजेस के ऊपर, या एस्प्रिन के लिए इन केस ऑफ एलिमिनेशन, और फिर एब्जॉर्प्शन में हमारे पास सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म जो है दे फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो वहाँ पे इसकी कोई यूटिलिटी है। एंड इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड इफ यू प्लॉट द डेटा एज सच on the rectangular graph paper के ऊपर आप प्लॉट करते हैं लाइक 0 50 इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू, ठीक है, देयर इज 50 का डिफरेंस है, एंड हियर 20 का आपस में डिफरेंस है। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर। इफ यू प्लॉट द फर्स्ट ऑर्डर डेटा ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, नो स्ट्रेट लाइन, आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सो इट दिस इक्वेशन और दिस ग्राफ it can not be used to calculate the slope because the curve is not, you can say the curve is not straight. But if you convert the data into natural log and plot it on the x-axis as well as on the y-axis, you will see कि आपके पास curve it is straight, आपके पास straight आएगी। The x-axis is linear one, and the you can say the y-axis is y-axis data is converted into natural log, इसमें हमने convert किया हुआ है, and your slope will be equal to minus k। और इसकी और भी कैलकुलेशन है दैट विल बी कमिंग इन द कमिंग स्लाइड। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस के जब आप इसको नेचुरल लॉग के साथ प्लॉट करते हैं। एंड इफ यू कन्वर्ट द डेटा इनटू कॉमन लॉग, अगर आप अपना डेटा जो है इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप दैट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। आपकी स्लोप इसके इक्वल होती है। अगर आप यही डेटा सेम डेटा विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू सेमी लॉग, आप इसको सेमी लॉग का ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं लाइक दिस वन, इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 and then 10 and then 100, so it means this is semi log graph paper। अगर आप इसके ऊपर प्लॉट करेंगे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। ये स्लोप इधर भी वही है, और इन केस ऑफ अगर आप इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं इट इज द सेम। अगर आप इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं इट इज इक्वल टू माइनस के, तो ये माइनस के की इक्वल आ जाती है। ओके, so next our slide is about the first order जो kinetics है हमारी उससे रिलेटेड है। so in case of first order kinetics, अगर आप इसका डेटा यानी कि आई मीन कि विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लॉग में कन्वर्ट करने से, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते, आप इसको प्लॉट करते हैं, यूर कर्व इज नॉट स्ट्रेट, आपकी कर्व स्ट्रेट नहीं आती इन केस ऑफ फर्स्ट। लेकिन जीरो ऑर्डर में आप देख रहे थे कि द कर्व वाज वेरी स्ट्रेट, आपकी स्ट्रेट नहीं आती है, एंड आर वैल्यू इज इक्वल टू 0.77, विच मीन्स कि आर वैल्यू इट इज लेस देन 0.95 एंड इट इज वेरी लेस देन 0.95। सो दिस इक्वेशन, दिस ग्राफ कैन नॉट बी यूज्ड to calculate the slope because the r value is less than 0.95। but if you convert the data into natural log, अगर natural log में convert करते हैं and you plot it on the rectangular graph paper, you will get the straight line, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, and in this case the slope is equal to minus k, जिस तरह मैंने पहले बताया, minus k divided by 2.303,
and it is equal to the natural log of y2, the natural log of y1 divided by t2 minus t1. t हमारे पास जो वो है, I mean के the natural log of y2 3.219, that is at r3 this is equal to 3.219, and at r1 it is equal to 3.912, उसके इक्वल है. तो जब इसको माइनस करते हैं और 2 minus 1 that is t2 and t1 is equal to 1 r, so इससे डिवाइड करते हैं, your answer is minus 0.693. This indicates that per unit time or per unit r there is the decrease is minus 0.693. That is the, if it is the concentration in log, that will be the decrease. आपका ये decrease है in case of first order kinetics. Now moving to the next slide, if you plot that same data and convert it into common log, अगर आप इसके साथ वो करते हैं, again the curve will be straight, और आपके पास जो slope होगी that will be equal to 2.303 the log of y2. आप y2 का जो भी आपकी वैल्यू है y1 उसका log ले लें आप, and 2e2 minus t1, so 2.303, and y2 is equal to 1.398, and the y1 is equal to 1.699. इसे आप माइनस करते हैं, your answer is it is the same. तो आप अगर ग्राफ को कॉमन लॉग के ऊपर आई मीन द इसके ऊपर कॉमन लॉग के थ्रू प्लॉट करते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, या आप इसको नेचुरल लॉग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर, योर स्लोप इज सेम. तो आपकी स्लोप सेम होती है. एंड इफ यू प्लॉट आई मीन द amount or the concentration on the y-axis and on the through the semi-log graph paper. अगर आप semi-log graph paper के through plot करते हैं, semi-log means 1 से start होगा 10, 10 to 100, 100 to 1000 and 1000 to 10,000. तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, your curve is straight, आपकी स्ट्रेट आती है, r value is equal to 1, और इसकी जो इक्वेशन है that is equal to y is equal to, I mean the concentration at 18 time, it is equal to the intercept हमारी that is equal to 100 की इक्वल है, ऑलमोस्ट ऑल इट इज इक्वल टू 100 e रेस्ट पावर माइनस के टी, और के टी जो है दिस इज द टाइम, जो भी आपका टाइम है जिस टाइम पे आप कंसंट्रेशन मेजर करने चाहते हैं. के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी, तो के उसके इक्वल है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ. तो दैट इज यू कैन से द इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 1 आर. तो हमारा इस केस में 1 आर है, सो दैट्स वाई, क्योंकि ये हाफ ऑफ कंसंट्रेशन इट डिक्रीजेस, दैट इज इन 1 आर, तो 1 आर है, सो वी विल हैव दिस इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा. बिकॉज के इज इक्वल टू माइनस 693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 1, तो ये सारा वही हो जाएगा 0.693 माइनस विद एट विच टाइम यू वांट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, तो उसका आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द डेटा, तो आपके पास डेटा आ जाएगा. So if you want to have the you can say the slope, तो 2.303 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3 या 2.303, एंड log of 25 जो आपका 25 है t2, log of 50 डिवाइड बाई 2 minus 1, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एंड अगेन यू विल हैव द सेम, दैट इज माइनस 0.693 आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी. So this is all about the today's lecture. I mean graph क्या है, there are two types of graph. One is called as rectangular graph paper, where the distance between the values it is the same. Another is a semi-log graph paper, where the x-axis is linear and y-axis is logarithmic. तो इसमें वो 1 से स्टार्ट होती है या 0.1 से होती है, एंड यू हैव जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और फिर ये डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप किसी वक्त उस ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ. सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर. So if you have any comment, please mention in the comment section. I hope this lecture will be helpful for you. Thank you.